तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में चूंकि हम वेरिएबिलिटी को हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबिलिटी है वो कितनी है, क्योंकि वेरिएबिलिटी ही जो मेन रीजंस है दैट इज़ फॉर रिसर्च जो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जो measures of dispersion, by mean of measure of dispersion we mean the extent to which the observation in a sample or in a population vary about their mean. The quantity which measures this characteristic is called measures of dispersion. So measure of dispersion जो है वो हमें ये प्रोवाइड करेगा कि आपके पास जो amount of variability है वो कितनी है। तो उसके डिफरेंट फिर टाइप्स हैं, फिर जो फार्मूला है वो दे आर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब दो डेटा सेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं सो वी नीड देयर टू फाइंड देयर द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी. So the set which have least amount of variability, it's mean there is more consistent as compared to the other. So फोर डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो कि हम इससे जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को हम कैलकुलेट करेंगे। सो उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज रेंज. Range is very simple. There is a difference between the maximum and the smallest and the largest observation, that is known as uh, range. The semi-interquartile range or quartile deviation, as we know the quarter which data which quartile is which divide the data into four equal parts. जबकि नेक्स्ट जो है मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन है एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, बट द फोर्थ वन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर important, is all of them, and we are using very broadly for the data analysis. अब हम आते हैं रेंज की तरफ. सो रेंज आर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा. जो सबसे स्मॉल वैल्यू है और जो सबसे लार्ज वैल्यू है उन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली द रेंज. So xm, that is provide us xm, we denote for the largest value, while x naught we denote for the smallest value. So the difference between the range, this difference between the smallest and largest observation is known as the uh, range. अच्छा, रेंज के जो एक डिसएडवांटेजेस है, द फर्स्ट थिंग इट्स इग्नोर ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन. सो द फर्स्ट थिंग, द रेंज इज सिंपल concept and easy to compute. That is, it's the good thing is that it has, however, two serious disadvantages. The first advantage is it's ignore all the other information. The second disadvantage is that it's only consider the smallest and largest value, and these are the disadvantages of the range. अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन व्हिच मोर एज वी नीड द रिलेटिव वैल्यूज, दैट इज द रिलेटिव डिस्पर्जन वी नीड. सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. द रेंज हैज टू सीरियस डिसएडवांटेजेस. For this purpose, we use another measure of dispersion known as coefficient of dispersion. Mathematically can be written as xm minus x naught, that is xm plus x naught. So now let's go towards a simple example. For that, find the range and coefficient of dispersion for the given data set. तो हमारे पास जो given data set है that is 9, 8, 7, 5, 12, 14, 16 and 18. A very simple example for beginners. That is xm is actually the maximum value which in the data set is 18. X naught is the minimum value, that is 5. So r is very simple, that is 18 minus 5, the difference between largest and smallest observation, and that is 13 is actually the amount of variability in the given data set. If we go towards the coefficient of dispersion, so that is simple, that xm minus x naught divided by xm plus x naught. So we know that 18 is the maximum value and 5 is the minimum value. So in numerator, that is the difference between that two values, and denominator, that is the addition of the two values. So 13 divided by 23, so 0.565 is the coefficient of dispersion.
So thank you very much for this. That is some information and lecture about the range and the coefficient of variation.